Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that all of you are good and safe and sound at home. Students, today we are going to deal with the bookwork of lesson number 1 and bookwork page number 5, 6 and 7 on your textbook, right? So let me give you some concepts before starting that work. That what is a noun and what are the kinds of nouns. Alright. A noun is a word that names a person, place, thing or an idea. नाउन क्या है? इट्स अ नेमिंग वर्ड. कोई भी नाम जो हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, किसी शख्स, चीज़, जगह या किसी आइडिया को दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ नाउन. जो क्या है? नाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, थिंक हेयर, दिस वन थिंग, इट हैज़ अ नेम. दिस पर्सन हैज़ अ नेम, दैट इज कॉल्ड बॉय. बॉय हम कहते हैं, राइट. दिस वंस प्लेस, यहाँ पे जो जगह है, दैट इज एक्चुअली बीच. तो बीच क्या है? नाउन, जो कि हम इस जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं. आइडिया, इट कैन बी क्वालिटी, योर इनर फीलिंग्स. तो हम उनको भी नेम देते हैं, लाइक हैप्पीनेस, इट कैन बी पेन, इट कैन बी सैडनेस. सो दीज आर आइडियाज, राइट. सो आइडियाज को हम प्रॉपर नेम दे देते हैं, दोज आर कॉल्ड नाउन्स. Person. A noun can name a person by name. For example, Ali, Sana, these are the names we use for persons. A noun can name a kind of a person. अब kind of a person भी हो सकते हैं. हम categorize करते हैं persons को भी different categories में, right? Teacher, man, sister, these are the names we use for those categories. Place. A noun can name a place by name. Islamabad, Sindh, etc. Right? It can be Islamabad, it can be Sindh. So these are the names we use for those places. A noun can name a kind of a place. A kind of a place, हम places को भी divide करते हैं different categories में, and those places can be a park, right? ये noun है. Classroom, home, right? So these are the nouns we use for specific places. हम उनके लिए use करते हैं. Alright, next one is think. A noun can name a thing like computer, ball, eraser. These are the things. We use specific name for those things. A noun can name a kind of thing. A kind of thing right here means हम उनको भी, चीज़ों को भी divide कर देते हैं different categories में और उनको हम name दे देते हैं, like hamburger, jump rope, t-shirt, etc. Idea. Why can't we identify his idea in this picture? अब हमें नहीं पता कि इनके माइंड में क्या है, right? His feelings, हम उनकी feelings नहीं समझ सकते, so हम उन feelings को name दे देते हैं, like happiness, joy, right? Ideas cannot be seen. For example, happiness, joy and pain, etc. हम उन feelings को भी proper name दे देते हैं और वो names क्या होते हैं? Noun कहलाते हैं. What ideas this person has, we don't even know. हमें नहीं पता, तो हम उन क्वालिटीज़ को भी दोज आर एब्स्ट्रैक्ट टाइप, जिनको हम टच नहीं कर सकते, राइट? हम देख नहीं सकते. सो दोज आर these are happiness, joy and pain are the names we use for those ideas. Kinds. There are different kinds of nouns. The main are common noun and proper noun. There are also different categories in these types. उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे. कॉमन नाउन हेयर इज अ नाउन दैट वी यूज़ फॉर जनरल पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, जो कि किसी आम शख्स, जगह या चीज़ या फिर किसी आइडिया के लिए हम यूज़ करते हैं. नाउन दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन. डज नॉट रिफर टू समथिंग स्पेसिफिक. और ये किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता, किसी आम चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कैट, शू, हाउस. अब ये आम सी चीज़ें हैं, राइट? देखने को आम सी चीज़ें हैं, तो इनके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं इनको कॉल करने के लिए, दोज आर बेसिकली द कॉमन नाउन्स. नेक्स्ट वन इज अ प्रॉपर नाउन. इट नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. अब ये किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और आइडिया के लिए हम जो नाउन यानी नेम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको पहले जो दिखाया था, दैट वाज अ शू. अब यहाँ भी क्या है? ये शू है, लेकिन जब नेक्स्ट वाली पिक्चर में आप देखेंगे तो दिस वन इज़ अ ब्रांड और स्पेसिफिक इसका नेम है नाइकी. सो दिस वन इज़ द नेम वी यूज़ फॉर अ प्रॉपर थिंग. हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं. नाउ दिस वन इज़ नॉट जनरल, कोई आम सा घर नहीं है. दिस इज़ एक्चुअली अ वाइट हाउस. सो वाइट हाउस ये नाउन
प्रॉपर नाउन है, क्यों है? क्योंकि ये स्पेसिफिक जगह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट आप इसे मटीरियल नाउन भी कह सकते हैं, विच यू कैन सी, हेयर, टच, स्मेल एंड टेस्ट, राइट। ऐसे नाम, ऐसी चीज़ों के नाम हैं कि जिनको आप टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हैट, right, you can touch it, you can wear it. Food can be smelled, food can be tasted. All right, next one is abstract noun, which you cannot see, hear, touch, smell and taste. It can be idea, it can be quality, it can be feeling. For example, love, for example, sadness, for example, happiness. It can be a strength, right? So it includes qualities and feelings, right? So this is the difference between concrete and abstract. Concrete cannot be touched, can be touched, can be smelled and can be heard, but abstract nouns cannot be, these things cannot be touched, cannot be smelled and cannot be tasted. Next one is collective noun. Collective here, students, means collection of things, right, in a group. A word used to represent a group of people, animals or things. For example, ship, आप single अगर देखेंगे तो obviously you will call it ship, आप इसे ship कहेंगे और that is a noun. But अगर group की form में होगा, so there is a specific name for that group और उस group का क्या नाम है? Fleet of ships. Next one is murder of crows. अब crow वैसे तो होगा singular होगा तो हम उसके लिए noun क्या यूज़ करेंगे? crow. बट अगर ये ग्रुप की फॉर्म में होगा तो उसके लिए भी स्पेसिफिक नेम होता है, कलेक्टिव, कलेक्टिव थिंग्स के लिए, दैट इज कॉल्ड अ मर्डर, राइट। सो मर्डर ऑफ क्रोज। नेक्स्ट वन इज गैंग ऑफ थीव्स। अब थीफ वैसे तो होगा तो ऑब्वियसली हम यूज़ करेंगे थीफ या फिर थीव्स यूज़ करेंगे, थीफ यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए, नाउन के लिए। लेकिन अगर ग्रुप की फॉर्म में होगा तो उसके लिए भी स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है, दैट इज गैंग, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन, यानी ग्रुप्स की फॉर्म में अगर कोई चीज़ हो तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक नेम होता है जो हम यूज़ करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल हेयर, स्टूडेंट्स, कैन बी काउंटेड, फॉर एग्जाम्पल an apple, 2 apples, 3 apples, etc. Apples can be it's countable. Books are countable. Boy, it can be 1 boy, 2 boy, 3 boys, those are countable. But these are the things which cannot be counted. For example, snow, rice, intelligence. Uncountable cannot be counted. For example, air, rice, water, etc. आप इन चीज़ों को count नहीं कर सकते, right? It's impossible. For example, snow, अब snow को तो आप count नहीं कर सकते. Rice, अब obviously अब एक राइस आप उठा के उसको count नहीं कर सकते. You cannot count intelligence, आप intelligence को भी count नहीं कर सकते. So this is the difference between countable and uncountable nouns. Alright, this is page number 5 on your book, students. Let us solve it. Find an appropriate noun from the given list and put it in the blanks. Also write whether these nouns are common, proper or collective nouns. So you are to write these words, right? आपने appropriate nouns इसमें लिखने हैं और उसको mention भी करना है कि are these common, proper or collective nouns. Alright, once upon a time, a dash lived in a village. A boy lived in a village. B-O-Y, boy lived in a village. You are to write here B-O-Y, boy, and this is a common noun, right? I told you boy is a common noun. Next one is, his name was Amir. Page number 6. He used to graze a dash of sheep. I told you, herd, group के लिए हम एक specific word use करते हैं. So H-E-R-D, herd, right? It is used for a group of sheep. H-E-R-D, herd of sheep, and this is a collective noun. Collective noun, right? Alright. At noon, he and his dash rested under a dash. Right? So here at noon, he and his herd. Again, you will write here H-E-R-D, herd, and this is also a collective noun.
rested under a clump here means cluster, right? cluster की form है, cluster of dash, sorry, clump of dash, clump of trees, clump of trees. So clump आप क्या यहाँ पे लिखेंगे इसके ऊपर, collective noun, clump means cluster, right? ग्रुप के लिए यूज होता है ये वर्ड. He was very happy with his work. We have finished with it. Next one is countable and uncountable nouns. Write countable on countable nouns and uncountable on uncountable nouns. I told you countable जो हैं उन्हें हम आसानी से काउंट कर सकते हैं और uncountable को काउंट नहीं कर सकते. Number one is here grass, grass. Grass, obviously we cannot count it. Write on it you, uncountable. You लिखेंगे आप इसके ऊपर. Next one is oil, OIL, oil. Obviously you cannot count it. आप इसको काउंट नहीं कर सकते. You लिखेंगे इसके ऊपर, uncountable. FOX, fox. Yes, it's countable. There can be 1, 2, 3 foxes, right? C लिखेंगे इसके ऊपर, countable. SNOW, snow. It's uncountable. You mention you on it. RAIN, rain. It's uncountable. Write you on it. Kidney. Yes, it's countable. Kidney is countable. C लिखेंगे आप इसके ऊपर. BUTTER, butter. It's uncountable. You cannot count butter. U. Juice. JUICE, juice. Uncountable. Next one is joy. JOY. Uncountable. Studio, 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 it's countable. Evil, EVIL, it's a feeling, I told you about it, right? Emotions जो होते हैं, it cannot be count. You लिखेंगे इस पे, uncountable. Tooth, 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 countable. C लिखेंगे इसके ऊपर. Camping, C, countable. Eagle, 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 you can count it. C लिखेंगे इस पे, it's countable. Spinach, you cannot count spinach. आप spinach को count नहीं कर सकते एक एक leaf लेके फिर उसको count करेंगे. Obviously it's impossible. It's uncountable. You लिखेंगे इसके ऊपर. Material noun. Write M on material nouns. Milk. Yes, these all are basically material. ये जितने भी हैं ये material ही हैं, right? Milk, sugar, wood. You can touch these things, right? Pencil, water, book, sand, clay, fan, tea, ये जितने भी हैं these are all material nouns. Material हैं, right? Concrete nouns हैं. Alright. Next one here, students, fill in the blanks to form abstract nouns from the given words. आपने इनको fill करना है blanks को abstract noun बना के, right? These words, by using these words आपने इनको use करना है और abstract noun बनाना है. Number one is hate, HAT, hate. Abstract noun is hatred, HATRED, hatred. Next one is succeed, succeed. Abstract noun is success, SUCCESS, success. Honest, 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 honesty. Y लिखेंगे आप यहाँ पे honest के बाद, honesty. Prosper, right here in abstract one, prosperity, PROSPERITY, ITY. Poor, POOR, poor. Abstract noun is poverty, POVERTY, poverty. Next one is bore, BORE, bore. Boredom, BOREDOM. Deceive, deception, DECEPTION, deception. Stupid, stupidity, STUPIDITY, stupidity. Laugh, laughter, ER लिखेंगे आप loft के बाद, LAUGHTER, laughter. Judge, JUDGE, judge. Judgment,
JUTGEMENT, एंड पे लिखेंगे आप JUTGEMENT, judgment, right? We have done with it. Now next one topic is object pronoun, right? In a sentence, students, there is a subject, verb and object, right? An object pronoun, I told you that noun is a name of person, place or things, but pronoun here, the word that we use instead of noun, जो कि हम noun की जगह इस्तेमाल करते हैं. For example, he, she, it can be her, it can be his, right? An object pronoun replaces a noun in object position. For example, Ali loves her. So her is an object pronoun. Some sentences have two objects. अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही object होगा, एक sentence में दो objects भी हो सकते हैं. For example, Ahsan sent roses to his mother. Now this one, Ahsan sent roses. अब ये एक object है, his mother is another object. So Ahsan sent roses is a direct one and his mother is indirect one, right? So there is a difference between these two direct and indirect objects. Direct objects answer the questions who or what receives the action of verb, and indirect objects answer the questions to whom or to what or for what something is done. For example, Umar sold the bike, right? उमर ने क्या किया? बाइक सोल्ड की, बाइक बेची, राइट? सो द बाइक इज डायरेक्ट टू होम. अब किसको बेची? टू जैद. जैद इज इनडायरेक्ट टू होम. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टू होम, टू वर्ड. सो दिस वन इज इनडायरेक्ट एंड दिस वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? सो देयर इज it is on page number 7. Yes, it's on page number 7 on your book, students. Come on page number 7. We are to solve it. Alright, let me read the question for you. Answer the following questions using the information given against each in the parenthesis. Then underline the direct objects once and indirect objects twice. The first one has been done for you. Now there is first one example that has been done for you. अब वो ये कह रहे हैं कि आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सिंगल टाइम अंडरलाइन करना है और इनडायरेक्ट को डबल टाइम करना है, बट आफ्टर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस. उन्होंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं एंड यू आर टू आंसर दीज क्वेश्चंस. आपने इनको यूज़ करना है, इसको यूज़ करके आपने उसको आंसर करना है, और आंसर करने के बाद आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसका डबल टाइम आपने अंडरलाइन करना है, राइट? So the next one, the B part is, whom did you pass the ball? Question mark, right? This is a question. You are to use this one now, right, to answer it. The answer is, I passed the ball to my friend. I passed the ball to my friend, right? Now here the ball is underlined ball. It's a direct one, and my friend which you used in the answer is, my friend क्या है? It's indirect object. I'm repeating it for you. I passed the ball to my friend. Ball is direct and my friend is indirect object in it. अब indirect वाले को आपने double time underline करना है. C part is, which story did Amir read to the students? Now you are to use this one. आपने इसको use करके इसको answer करना है. The answer is, Amir read Amir read The Thirsty Crow. Amir read The Thirsty Crow to the students. Amir read The Thirsty Crow to the students. अब thirsty crow को आप single time underline करेंगे, that is direct object, and students is indirect object. इसको आप double time underline करेंगे. D part is, what did you give to the poor man? This one is the question, right? You are to answer it by using this one word. आपने इसको use करना है. The answer is, I gave
I gave alms. This one is alms, right? I gave alms to the poor man. So alms is here direct, right? And the poor man is indirect object. Alms is direct and poor man is indirect object. Next one is, what did you give to your brother? A pencil box. You are to use it, right? What did you give to your brother? The answer is I gave a pencil box. I gave a pencil box to my brother. I gave a pencil box to my brother. Now pencil box is here direct object. You are to underline it. आपने इसको एक दफा underline करना है. My brother is indirect. My brother is indirect. So आपने उसको double time इस तरह से double time इसको underline करना है, right? I'm repeating it for you. I gave a pencil box to my brother. Pencil box is here direct and my brother is indirect, right? So I hope students all of the things are clear. If there is still ambiguity, you may ask me, right? So this is your diary for today. Revise bookwork of lesson number 1, page number 5, 6 and 7, right? Thank you very much.